So in this video we cover the solar cell. So basically we already cover the topics of the nuclear reactor, binding energy curve. So here it is, we cover the solar cell and its working. So basically, as you can see, so device which converts light energy into electrical energy. So it stands for the solar cell. The solar cell is nothing but to conversion take place from the sunlight energy into electrical energy, known as the solar cell. It's a p-n junction diode, although its construction different from conventional p-n junction diode. So basically it's a conventional p-n junction diode. So you can see that there is a load applied which is on a p-n junction diode. So here it is the p and the n and light scattered on the this diode. So by we can apply a load, and here it is we can get the flowing of the current by applying a load. So you can see the working of the solar cell. So when light hit the material, emission of electrons takes place. So whenever hit the material, light hit the material, so emission of electron takes place, and this is known as the photovoltaic effect. ठीक है, so emission of photons take place by hitting the light, known as the photovoltaic effect, while the voltage across it's known as the photovoltage, and the current is stands current across this setup is known as the photocurrent. If we connect a small load across this junction, it will bring current to flow in it. ठीक है, so applying this small load, we can flow the current as well. So here it is the types, or basically you can call as the generations. So basically there are the four generations of the solar cell: first generation, second, third, and the fourth one. So first generation, there are so three types: monocrystalline silicon, polycrystalline silicon solar cell, amorphous silicon solar cells. And the second generation, cadmium tellurium solar cell. Third generation is organic PV photovoltaic cell, dye-synthesized cell. And fourth generation is the quantum dots. So we can understand the first generation solar cell. So it's a conventional or the wafer based cells made up of the crystalline silicon. It's a high quality and single junction diode, large area covered. Here it is in the first generation solar cell. So it is effectively used and it is very efficient, but due to its high costs, also it has long lifetime. Advantage we can talk about, see advantage is it's a broad spectral absorption range, high current mobility. You can see it from here. These are basic things you can need to remember regarding this first generation solar cell. A monocrystalline solar cell. So basically, as we know that it is a types of the first generation solar cell, monocrystalline solar cell. The monocrystalline silicon cell, in this silicon is doped with the boron to produce a p-type semiconductor. ठीक है, so we dope the silicon with boron to get the p-type semiconductor. अपर लेयर जो होती है इसकी वेफर की, जैसे हमने बताया कि ये बेसिकली वेफर होती हैं, तो इसको हम डोप करते हैं टू प्रोड्यूस ए एन टाइप सेमी कंडक्टर. ठीक है, अपर लेयर जो डोप करते हैं पी टाइप से टू प्रोड्यूस एन टाइप सेमी कंडक्टर, इन दिस बिकम दी पी एन जंक्शन. सो मैक्सिमम एफिशिएंसी वी कैन अचीव्ड बाय दी monocrystalline silicon cell is the 24%. Now we move to the second type of the first generation solar cell is polycrystalline silicon cell. तो इसमें जो हम सिलिकॉन को कोड करते हैं ब्लॉक्स के अंदर छोटे छोटे इनटू प्लेट्स में कन्वर्ट करने के लिए, सोलर सेल मेड अप ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन. तो इसमें जो सोलर सेल जो होती है वो हमारी पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल की बनी होती है, और इसकी लो कॉस्ट रहती है और लो एफिशिएंसी रहती है, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स की हमारी हाई कॉस्ट थी और एफिशिएंसी भी हाई थी. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो इसमें अचीव करते हैं हम यहाँ पे 17.8% करते हैं. Now there is a amorphous silicon cell. So in this cell we doped with the silicon on glass. This is called the amorphous silicon cell. So maximum efficiency जो हमारी अचीव होती है यहाँ पे 13% होती है. So this all topic about the first generation solar cell. Now there is a second generation solar cell. So इसमें thin film solar cell रहती है, ये चीपर होती है हमारी, ये सस्ती रहती है जो टू प्रोड्यूस अ फर्स्ट जनरेशन, लार्ज फ्लेक्सिबिलिटी, लो एफिशिएंसी, लो कॉस्ट. तो टाइप्स तो होती हैं वो दो हमारे होते हैं, CDTE एंड द CIS. सो CDTE इज नथिंग बट द कैडमियम टेल्यूराइड सेल एंड द कॉपर इंडियम गैलेरियम सिलिकन सेल. एब्जॉर्बर मटेरियल जो हमारा इस्तेमाल होता है वो मेड अप ऑफ होता है CDTE एंड CIS. एडवांटेज इट इज़ द मेंशन बिलो, लो मटेरियल कॉस्ट, copper indium gallium diselenide silicon cell,
एन टाइप जो कॉपर इंडियम गैलेनाइट में हम जो एन टाइप का यूज़ करते हैं वो मेड होता है हमारा CDS से, और जो पी टाइप होता है हमारा वो होता है हमारा कॉपर इंडियम गैलेलियम सिलिकॉन सेल से। तो पी टाइप हम यूज़ करते हैं CDS में, और एन टाइप यूज़ करते हैं CDS में, और पी टाइप यूज़ करते हैं CIS में। नाउ वी मूव टू दी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। सो CIS डायरेक्ट बैंड गैप ऑफ दी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो बैंड गैप हमारा रहता है, सो बैंड गैप इज नथिंग बट जस्ट दी दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड। तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन, आल्सो नोन एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो इसका जो बैंड गैप रहता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एफिशिएंसी यहाँ पे 10% आती है। कैडमियम TE सेल की हम बात करें तो यहाँ पे तो इट्स जो इसका फॉरबिडन एनर्जी बैंड का डायग्राम में जो गैप आता है वो होता है 1.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स एन टाइप यूज्ड इन दिस ऑफ मेड अप ऑफ CDS एंड पी टाइप इज मेड अप ऑफ CDT। एफिशिएंसी इज 10%। थर्ड जनरेशन सोलर सेल्स में बात करें तो दीज आर दी मेड अप ऑफ द photo electrochemical cell PEC. Efficiency we get is here, it is the 40 to 60%. It is more efficient and more abundant material that we use to make is the third generation solar cell. Non toxic material are used to make this. ड्यूरेबिलिटी की बात करें और यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक PV सेल्स और डाइसेंटिजाइज सोलर सेल का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसको समराइज करें तो बेसिकली सोलर सेल का हमने पढ़ा था, सोलर सेल इज नथिंग बट जस्ट दी टू कन्वर्ट द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टैंड्स फॉर द सोलर सेल। If it is there is a combination of solar cell known as the solar array or solar panel or solar module, and we see the generations. So basically there are 4 types of solar generation, that first generation, second generation, third generation and the fourth one generation. So fourth one generation is basically stand for quantum dots. Third generation we are talking about stand for the CIS and CDTE cell, and the second generation is of second generation is made up of the CIS and CDT, and the first generation is the monocrystalline silicon cell, polycrystalline silicon cell and the amorphous silicon cell. Third generation is the PEC photo electrochemical cell, ठीक। and fourth generation last one is the quantum dot. So carrier generation move into the what are the carrier generations or and the recombination of carriers. So basically you can see that there is a band there in a electron, that is CB stands for the conduction band and the VB stands for the valence band. So conduction band contains free electron while the valence band contains the holes. So carrier generation and the recombination occur when electron makes transition from valence band to conduction band. सो कैरियर जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन हमारा तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन जो हमारा मूव करता है वो वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हमारा वहाँ पे जो है रिकॉम्बिनेशन और कैरियर जनरेशन जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो कैरियर जनरेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड पेयर इन पेयर इज कॉल्ड एज जनरेशन ऑफ द कैरियर्स। तो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो पेयर में जनरेट होते हैं। सो इसमें जो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर आर गेट जनरेटेड, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दी होल्स। Electron and hole pair is created by excited an electron from a valence band to the conduction band. Whenever the electron is moving from the, you can see it here from diagram that electron is moving from the valence band to a conduction band. This process to generate the charge carrier, okay, or generation in the charge, okay. You can see that energy formation take place while combining from the electron plus hole create a charge carrier. Now it's a recombination of carrier, so it's nothing but just the reverse process of the generation of the charges where electron and holes combine together to produce energy. So you can see that electrons and holes, these all both are combined together to produce an energy. Process by which free electron holes get eliminated is called recombinations of carrier. And transition from electron in this takes place from the conduction band to a valence band, which is responsible to create a hole in a conduction band. And you can see for the in a case of the generation of the carrier that electrons move from the valence band to a conduction band, okay. Electron fall from the conduction band to valence band where hole present in the valence band get disappear when the electron is moving. So recombination in release of the energy equal to the energy gap in the form of the photon or thermal energy. So basically at thermal equilibrium at constant temperature,
generation rate or recombination rate are both are equal at the thermal equilibrium condition. So you can see that the generation rate and the recombination rate are equal at the thermal equilibrium condition. So you can see that we cover the recombinations of the carrier and the charge carrier generations in the charge, important topic one. uh, you can see generation charge. Also there is a solar cell, it's working and it's all generations. Okay, you can see from the solar cell working and its generations of the solar cell. Also in previous video already I covered the binding energy curve, nuclear reactor itself, so you can watch it videos from previous year. Thank you so much guys, and thank you for the support. Keep loving guys.